Shall we turn our Bibles again to the last book, the book of Revelation, chapter 16, and read the entire portion of verses 12 to 16. और एक बार हमारे पवित्र शास्त्र को खोलकर उसकी अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 16वां अध्याय हमारा जो पढ़ने का भाग है 12 वचन से लेकर 16 वचन तक पूरे हिस्से को हम पढ़ेंगे. या आपण प्रकटीकरणाचं पुस्तक 16वां अध्याय 12 ते 16 वचन पर्यंत वाचूया. और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए. और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा. ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे. देख मैं चोर की नाई आता हूँ. धन्य वे है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें. और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है. सहाव्याने आपली वाटी फरात महानदावर ओतिली तो सूर्याच्या उगवतीपासून येणाऱ्या राजांची वाट सिद्ध व्हावी म्हणून तिचे पाणी आटून गेले. नंतर मी मेंढकासारखे 3 अशुद्ध आत्मे अजगराच्या तोंडातून, श्वापदाच्या तोंडातून व खोटा संदेष्टाच्या तोंडातून निघताना पाहिले. ते चिन्ह करणारे भूतांचे आत्मे आहेत. ते संपूर्ण जगातील राजांस सर्व सत्ताधारी देवाच्या त्या मोठ्या दिवसाच्या लढाईसाठी एकत्र कराव्यास त्याचकडे बाहेर जातात. पहा मी चोरासारखा येतो. आपण नग्न असे चालू नये व आपली लाज लोकांस दिसू नये म्हणून जो जागृत राहतो व आपली वस्त्र राखितो तो धन्य. त्यांनी त्यास इब्री भाषेत हर्मगदोन म्हटलेल्या ठिकाणी एकत्र केले. And the 6th angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. परमेश्वराची स्तुती असो. Today we're going to see many details hidden in these verses that we read. आज हमने ये जो वचन पढ़े उसके अंदर छिपे हुए कई विवरण विस्तृत बातों को हम देखेंगे. आज जे आहे हे वाचलेल्या भागामधून अनेक रहस्य आपण ऐकणार आहोत. We are going to read a lot of scripture. आज हम बहुत सारे पवित्र शास्त्र के हिस्सों को पढ़ेंगे. अधिक पवित्र शास्त्राचे भाग वाचणार आहोत. We are going to compare verses और हम कई वचनों की तुलना करेंगे. वचनांची तुलना आपण करणार आहोत. and compare it to what is going to happen in the world very shortly. और बहुत जल्दी संसार में क्या होने जा रहा है इन बातों से उसकी तुलना करेंगे. लवकरात लवकर जगात काय होणार आहे ह्याची तुलना करणार आहोत. Some things are very interesting. उसमें कुछ बातें बहुत दिलचस्प हैं. काही गोष्टी खूप चित्तवेधक आहेत. But all may not understand everything. लेकिन सब लोग सब बातों को शायद समझ नहीं पण पाएंगे. सर्वजण सर्व काही समजूही शकणार नाहीत. But one thing is sure. लेकिन एक बात निश्चित है. पण एक गोष्ट खात्रीपूर्वक आहे. In the course of this message and in the course of every message that God gives, there is something personal for everyone seated here इस before us. संदेश में और परमेश्वर देने वाले हर एक संदेश में यहाँ बैठे हुए हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष बात पाई जाती है. ऐकणाऱ्या या संदेशामध्ये इथे बसलेल्या प्रत्येकांसाठी वैयक्तिक रीतीने काही ना काही गोष्टी आहेत. So the Bible says that for those who find that word that is meant for them, it is life to them that find them and health to all their flesh. और पवित्र शास्त्र कहता है कि जो वचन पर लोगों के लिए परमेश्वर देता है, जो उसे ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन दिखाई देता है और उनके शरीर के लिए वो आरोग्य होकर दिखाई देता है. परमेश्वराचं वचन म्हणते देवाच्या वचनामध्ये जीवन आहे. जे त्याला शोधतात त्यांना ते जीवन आणि शरीरासाठी आरोग्याचं होईल. So in the course of this sermon, many things may get into your head, some things may go above your head. और इस संदेश को सुनने के समय कई बातें आपके दिमाग में प्रवेश करेंगी, कुछ बातें आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगी. आणि हा संदेश ऐकत असताना काही गोष्टी तुमच्या डोक्याच्या आत जातील आणि काही डोक्यावरून जातील. But there is some word that is meant to go into our hearts. लेकिन कुछ बातें हैं जो कि हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करने के लिए ठहराई गई आणि है. असेही काही गोष्टी आहेत ज्या आपल्या हृदयाच्या आत जाणार आहेत. Shall we close our eyes for a minute? एक क्षण के लिए अपनी आंखों को हम बंद करें. या एका क्षणासाठी आपण आपले डोळे बंद करूया. The Lord should open the ears of each one seated in this place
place to so find that word that is meant for each one of us. हर एक व्यक्ति के लिए जो वचन ठहराया गया उसे ढूंढ के पता लगाने के लिए परमेश्वर हर एक के कानों को खोलना चाहिए. आणि आपल्यासाठी जे वचन ठेवलेलं आहे ते शोधून काढण्यासाठी देवाने आपले डोळे आणि कान उघडले पाहिजे. As I speak to you, I want the Lord to open my ears also to hear His voice in the course of this sermon. और जैसा मैं आपको कह रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे कानों को खोल दे कि संदेश के बीच में प्रभु ने मेरे लिए जो रखा है उसे मैं सुन पाऊँ. आणि मी हे प्रचार करत असताना मीही प्रार्थना करत आहे की माझ्यासाठी जी वचने ठेवली आहेत ते मी ऐकण्यासाठी आणि समजण्यासाठी देवाने माझे कान आणि हृदय उघडले पाहिजे. That the Lord might open our ears to find that personal word, shall we praise God. उस व्यक्तिगत वचन को ढूंढ पता लगाने के लिए परमेश्वर हमारे कानों को खोलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. आपल्यासाठी ठेवलेले वैयक्तिक praise संदेश आपण प्राप्त करण्यासाठी या आपण धन्यवाद करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. As most of us know, we are studying the Word of God under the title, The Battle of Armageddon. जैसे हम अधिकतर लोग जानते हैं, हम जो विषय पर ध्यान कर रहे हैं हमारा केंद्रीय विषय है हर्मगिदोन की लड़ाई. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे आपलं अध्ययनाचा केंद्र विषय हर्मगिदोनचे युद्ध. The Bible prophesies that the biggest battle in the history of humanity is going to take place shortly. Most of us are going to be alive to see it. It's going to happen in our days. पवित्र शास्त्र इस बात की भविष्यवाणी करता है कि संसार में अभी तक नहीं हुआ ऐसे एक बड़ा विश्व युद्ध बहुत ही जल्द होने वाला है और यहाँ बैठे हुए हम में से कई लोग उसमें शामिल होंगे. आणि पवित्र शास्त्र असे म्हणते की या शेवटल्या दिवसांमध्ये हे हर्मगिदोनचे युद्ध होणार आहे आणि ते आपण सर्व इथे बसलेले जण पाहणार आहोत आणि आपण आपलाही समावेश त्यामध्ये आहे. There's going to be so many deaths that the Bible says that blood will flow like a river in those days. पवित्र शास्त्र कहता है कि उन दिनों में इतनी अधिक मृत्यु होगी कि जो लहू मनुष्य का लहू है वो नदी के समान बहेगा. पवित्र शास्त्र म्हणते की त्या दिवसांमध्ये हे युद्ध आणि लढाई एवढं भयंकर असेल की सर्व अनेक लोक मरतील आणि रक्तपात होईल. And the population of this world is going to be reduced considerably, substantially. और संसार की जो जनसंख्या है वो बहुत ही अधिक कम होती जाएगी. आणि जगाची जी जनसंख्या आहे ते खूपच कमी होईल. And it will culminate in this battle called the Battle of Armageddon, after which there will be great peace on earth for 1,000 years. और ये जो हर्मगिदोन की लड़ाई है उसके साथ ही उसका अंत हो जाएगा. उसके पश्चात इस संसार में एक बड़ी शांति दिखाई देगी. आणि हे हर्मगिदोन युद्धाबरोबर ते समाप्त होईल आणि त्यानंतर 1000 वर्षासाठी जगात मोठी शांती होईल. This battle will take place in the plains of Megiddo, or the valley of Megiddo as depicted in the chart here. और ये जो युद्ध है वो मगिदो की तराई में या मगिदो के मैदान में होगा जैसा इस चार्ट में दिखाया गया या है. चार्ट मध्ये जसं दाखवलं आहे तसे मगिदो खोऱ्यामध्ये हे युद्ध होईल. This Megiddo has been the site of many battles in extra biblical history and in biblical history. ये जो मगिदो नाम का स्थान है वो पवित्र शास्त्र के इतिहास में और पवित्र शास्त्र के बाहर के इतिहास में देखने से कई तरह के युद्ध होने वाला एक स्थान है. आणि हे मगिदो मध्ये जे आहे अनेक प्रकारचे युद्ध होणार आहेत आणि झालेत असे पवित्र शास्त्राच्या आत आणि पवित्र शास्त्राच्या बाहेरच्या इतिहासातही नमूद केले आहे. In the Bible records two battles that have taken place in this site before this. इसके पहले इस क्षेत्र में हुए दो युद्धों के बारे में पवित्र शास्त्र में वर्णन किया गया है. त्याच्या अगोदर जे दोन युद्ध झाले आहेत त्या ठिकाणी त्याविषयी बायबल मध्ये नमूद केले आहे. When the children of Israel fought against the Sisera, the captain of the host of Canaan, it was in this vicinity. जब इस्राएली लोगों ने सीसरा जो कि कनान का वो सेनापति होकर दिखाई दिया था उसके विरोध में जब युद्ध लड़ा था तो वो इस क्षेत्र में वो युद्ध हुआ था. सीसरा जे कनान देशाचा अधिपती होता त्याच्या विरोधात इस्रायलांनी लढाई केली ते या ठिकाणी होते. You don't have to read it, but the verses in Judges chapter 5 and verse 19. पढ़ने की आवश्यकता नहीं लेकिन न्यायों की पुस्तक 5वें अध्याय के 19वें वचन में हम उसे देख सकते हैं. वाचायची गरज नाही. शास्त्रे 5वा अध्याय 19व्या वचनात लिहिलं आहे. Some centuries later, another battle was fought. और उसके कुछ शताब्दियों के पश्चात और एक युद्ध हुआ. काही शतकानंतर अजून एक युद्ध झाले. When Pharaoh Necho, king of Egypt, went to participate in a battle called the Battle of Carchemish, Josiah, the king of Israel, he tried to interfere in an unnecessary battle. जब मिस्र देश का फेरो निको जो है करकमिश में जाकर युद्ध लड़ने के लिए गया तो जो योशिया राजा था उस समय उसके साथ वो इस क्षेत्र में युद्ध हुआ. आणि फारो जो निको मिस्र देशाचा राजा निको जो आहे ते लढाई करायला गेला तेव्हा
कार्केमिश मध्ये त्यांनी लढाई केली. So when Josiah went to fight against the king of Egypt came back to fight against Josiah. This battle between Egypt and Israel took place in Megiddo. और जब राजा योशिया जो इसराइल का राजा था उसके विरोध में लड़ने के लिए गया तो मिस्र देश का राजा उसके पीछे उसको लड़ने के लिए आया और ये जो युद्ध हुआ था उन दोनों के बीच में वो मगिदो नाम के स्थान में हुआ. आणि फारो आणि निको ह्या दोघांचं जे लढाई आहे, संघर्ष आहे, हे जे आहे योशिया राजाच्या विरोधात झाले तेव्हा हे मगिदो नामक जागेमध्ये झाले. You read this in 2 Chronicles 35 and verse 22. उसके बारे में हम दूसरा इतिहास 35 अध्याय के 22वें वचन में पढ़ते हैं. दुसरा इतिहास 35वा अध्याय 22वा वचनात वाचतो. This final battle that I'm talking to you about is going to take place again in this place. और ये जो अंतिम युद्ध के बारे में मैं बता रहा हूँ वो भी इसी स्थान में अंत में होगा. हा शेवटचा युद्ध मी बोलत आहे तेही ह्याच ठिकाणी होईल. This site is suitable for battle for many countries because there are many access routes that lead from many countries to this valley. ये जो क्षेत्र है वो युद्ध के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है क्योंकि कई अन्य देशों से इस क्षेत्र में आने के लिए कई रास्ते दिखाई देते हैं. या ठिकाणी अन्य जागेतून येण्यासाठी जागा सरळ आहे म्हणून हे जे आहे युद्धाचं एक क्षेत्र होऊन बदलले आहे. We studied many things but in connection with this in the past 3 days. बीते 3 दिनों में इससे संबंधित कई बातों के बारे में हमने अध्ययन किया था. या विषयी संबंधित अनेक गोष्टी आपण गेल्या दिवसामध्ये मनन केले. Yesterday we saw how God goes out of the way to protect 144,000 Israelis, Jews, and to preserve them when the Antichrist works havoc in Israel, killing many Jews. कल के दिन हमने ध्यान किया था किस प्रकार से परमेश्वर अपने मार्ग से हटकर 1,44,000 मोहर लगाए हुए इसराइलियों को बचाने के लिए जाता है जबकि मसीह विरोधी इसराइल देश में वो रक्तपात मचाते हुए इसराइलियों के विरोध में वो लड़ता है. जेव्हा ख्रिस्त विरोधी इस्रायलांच्या विरोधामध्ये लढेल आणि अनेक रक्तपात होईल, अनेक लोकांना मारून टाकेल, त्यावेळेस आपला प्रभू येशू ख्रिस्त कसा ह्यांच्यासाठी लढाई करत आहे त्याविषयी काल आपण ऐकले. So these 144,000 Jews are going to be protected and preserved so that when Jesus comes down and takes reign over the earth for 1,000 years after the battle of Armageddon, these 144,000 Jews are going to spread through the earth and populate the earth. 1,44,000 यहूदी लोग जिनके ऊपर मोहर लगाई गई है वे लोग संभाले जाएंगे क्योंकि हरमगिदोन की लड़ाई के पश्चात जब यीशु मसीह राज्य करने के लिए आएगा उस समय ये 1,44,000 यहूदी वो पृथ्वी भर में फैलकर वे विश्व की जनसंख्या बन जाएंगे. आणि हे मुद्रांकित केलेले 1,44,000 यहूदी यासाठी सांभाळले जातील की हरमगिदोनच्या युद्धानंतर जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त 1000 वर्षाच्या राज्य करण्यासाठी या पृथ्वीवर येईल तेव्हा हे 1,44,000 यहूदी संपूर्ण जगामध्ये ते पसरतील आणि जनसंख्या वाढवतील. I would like to go aside for a moment and clear a possible lingering doubt that's in the minds of many people regarding this 1,44,000 people. इस 1,44,000 लोगों के विषय में कई लोगों के हृदय में एक प्रकार का संदेह दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी मैं अपने विषय से हटकर थोड़े इस बात के ऊपर बताना चाहूंगा. 1,44,000 या यहूद्यांच्या विषयामध्ये अनेक लोकांच्या मनामध्ये काही शंका आहेत आणि म्हणून मला वाटत आहे की ते मी तुमचं शंका दूर करू. There are two groups of 1,44,000 mentioned in the Bible, one in Revelation chapter 7, the other in Revelation chapter 14. Many say that they are the same, but they are not the same. प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में 1,44,000 लोगों के दो झुंडों को हम देखते हैं. कई लोग कहते हैं कि ये दोनों झुंड एक ही हैं, लेकिन वे दोनों एक नहीं है परंतु अलग अलग है. आणि प्रकटीकरण 7व्या अध्यायामध्ये 1,44,000 लोक आहेत आणि प्रकटीकरण 14व्या अध्यायामध्ये दुसरा गट 1,44,000 आहे आणि अनेक लोक म्हणतात हे दोन्ही एक आहे, काही लोक म्हणतात हे दोन वेगळे आहेत. There are many points to prove this, but I will show you one prominent reason. इस बात का सबूत देने के लिए बहुत सारे वचन है, लेकिन मैं आपको केवल एक मुख्य कारण बताऊंगा. ह्या गोष्टींचा प्रमाणित करून दाखवण्यासाठी अनेक कारणे आहेत, पण एक कारण मी तुम्हाला दाखवणार. If you read from Revelation chapter 7 and verse 3, these 1,44,000 Jews are on earth. प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय का 3रा वचन में पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि ये जो 1,44,000 यहूदी हैं वे पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं. प्रकटीकरणाचं पुस्तक 7व्या अध्याय 30व्या वचनामध्ये जे 1,44,000 यहूदी आहेत ते ह्या पृथ्वीवर आहेत. They are sealed on earth, they will remain on earth, they will populate the earth. उनको वह पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर उनकी मोहर लगाई जाती है और पृथ्वी पर ही वे जनसंख्या होकर फैल जाएंगे. ते लोक पृथ्वीवर आहेत, त्यावर पृथ्वीवर शिक्का मारली आहे
आणि पृथ्वीवरची आबादी ते वाढवणार आहेत. But the people in Revelation chapter 14, the 1,44,000 there, they are not on earth, they are in heaven. और लेकिन 1,44,000 लोग जो कि प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में दिखाई दे रहे हैं, वे लोग पृथ्वी पर नहीं है परंतु स्वर्ग में हैं. प्रकटीकरण 14व्या अध्यायामध्ये लिहिलेले 1,44,000 जे संतगण आहेत ते लोक आहेत ते पृथ्वीवर नव्हे तर स्वर्गात आहेत. To prove this, let's go first to Revelation chapter 4. और इसके बारे में प्रमाणित करने के लिए पहले हम प्रकाशित वाक्य 4थे अध्याय में देखेंगे. याच्या स्पष्टीकरणासाठी प्रकटीकरण 4था अध्याय आपण पाहूया. There in verse 1, John says he saw a door opened in heaven. वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना कहता है उसने स्वर्ग में एक द्वार को खुला हुआ देखा. तेथे योहान म्हणतो मी स्वर्गात एक दार उघडलेलं पाहिलं. And then he hears a voice, come up hither. और वहां पर वो एक आवाज को सुनता है, यहाँ ऊपर आ जा. तेथून ते एक आवाज ऐकतो, इथून वर ये. So he goes up and enters into that portal that leads to heaven. और इस कारण से वो स्वर्ग की ओर जाने वाले उस मार्ग में प्रवेश करके वो ऊपर की ओर जाता है. आणि वर चढून जे आहे स्वर्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर तो जातो. And there he sees a throne. वहां पर वो एक सिंहासन को देखता है. तेथे तो एक सिंहासन पाहतो. There he sees 4 beasts. वहां पर वो 4 पशुओं को देखता है. तेथे तो 4 पशु पाहतो. There he sees 24 elders. वहां पर वो 24 प्राचीनों को देखता है. तिथे तो 24 वडील गणांना पाहतो. So keep this in mind, the 24 elders and the 4 beasts mentioned in this chapter are in heaven. और देख लीजिए ये जो 4 प्राणी है और जो 24 प्राचीन है, ये लोग जो है स्वर्ग में दिखाई दे रहे हे हैं. 4 प्राणी आणि 24 वडीलगण जे आहे स्वर्गात आहेत. Now turn to Revelation chapter 14. अभी प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में आइए. आता प्रकटीकरण 14व्या अध्यायामध्ये या. We read that there is 1,44,000 people who stand in heaven, in Zion with the Lamb. यहाँ पर हम देखते हैं वो 1,44,000 लोग जो है वो मेमने के साथ सिय्योन पहाड़ पर खड़े हुए हैं. तेथे आपण पाहतो 1,44,000 संतगण कोकऱ्या बरोबर सियोन डोंगरावर उभे आहेत. Now read verse 3. अभी तीसरा वचन पढ़िए. आता तिसरं वचन वाचूया. और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे कोई वे गीत ना सीख सकता था. ते राजासनासमोर आणि 4 प्राणी व वडील या समोर जसे काय एक नवे गीत गात होते, ते गीत पृथ्वीवरून विकत घेतलेले 144,000 लोक याशिवाय कोणाला शिकता येत नव्हते. And they sang as it were a new song before the throne and before the 4 beasts and the elders, and no man could learn that song but the 144,000 which were redeemed from the earth. So they sang this song. These 144,000 are before the throne, before the beasts, before the elders. This is not an earthly scene. This is in heaven. और ये 1,44,000 लोग जो थे वे गीत गा रहे थे और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों प्राचीनों के सामने गा रहे थे. ये जो दृश्य है ये पृथ्वी पर का नहीं है लेकिन एक स्वर्ग का दृश्य है. 1,44,000 संतगण जे आहे कोकऱ्या बरोबर त्या सियोन डोंगरावर आहेत आणि ते 4 प्राण्यांसमोर आणि 24 वडील जणांसमोर आहेत. हे दृश्य पृथ्वीवरचं नव्हे तर स्वर्गाचं आहे. So just like there is an earthly Jerusalem and the 1,44,000 Jews form the cream of the Jews, there is a heavenly Jerusalem and the 1,44,000 there are the cream of the heavenly Jerusalem. जिस प्रकार से एक भौमिक यरूशलेम है और जो 1,44,000 यहूदी हैं वे उसकी ऊपरी परत मलाई होकर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से एक स्वर्गीय यरूशलेम है और उसमें ये जो 1,44,000 लोग हैं वे उसकी ऊपरी परत होकर दिखाई देते हैं. आणि आपण पाहतो या पृथ्वीवर असलेले 1,44,000 यहूदी जे आहेत ते पृथ्वीवर असलेले यरूशलेमेचे मलाईगण आहेत आणि स्वर्गात असलेले जे 1,44,000 संतगण आहेत ते नवीन यरूशलेमेचे वरचे एक मलाई सारखे आहेत. So the two sets of 1,44,000 are distinct. और इस कारण से ये जो 1,44,000 के 2 झुंड हैं वे अलग अलग हैं. म्हणून आता इथे 2 अध्यायामध्ये वाचलेले 1,44,000 गण जे आहेत वेगवेगळे आहेत. Yesterday I proved to you from the scriptures how this 1,44,000 Jews are going to be protected in a place outside Israel, in a place in the country of Jordan called Petra or Bozrah, which is in the Bible, and they are going to be preserved in a mountainous area in that region. कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से ये जो 1,44,000 यहूदी लोग हैं वे किस प्रकार से संभाले जाएंगे. इस्राएल के बाहर यरदन देश में पेट्रा नाम के स्थान में जो और या बोसरा नाम का स्थान जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है वहां पर इनको सुरक्षित रखा जाएगा. आणि काल आपण ऐकलं आहे 1,44,000 यहूदी ज्यांच्यावर शिक्का मारले आहे ते कसे सांभाळले जातील. पेट्रा नामक जागेवर बोसरा इथे जे आहे त्या पर्वतांमध्ये त्यांना सांभाळले जाईल.
Now, let's read from Micah chapter 2 and verses 12 and 13. मीका की पुस्तक दूसरा अध्याय का 12 और 13वां वचन पढ़ेंगे। मीकाचं पुस्तक दुसरा अध्याय 12 आणि 13वां वचन वाचूया। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इसराइल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोसरा की भेड़ बकरियों की नाई एक संग रखूंगा। उस झुंड की नाई जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। हे याकोबा, मी तुम्हा सर्वांना निश्चय एकत्र करीन, इस्रायलाचे अवशेष मी निश्चय जमा करीन, मी त्यास बसराच्या मेंढराप्रमाणे एकत्र करीन। लोक समुदाय मोठा असल्यामुळे कुरण्यामधल्या कडपाप्रमाणे ते गजबजतील। फोडतोड करणारा त्यांच्या पुढे चालला आहे, तो फोडून वेशीतून पार निघून गेले। त्याचा राजा त्याच्या पुढे चालत आहे व परमेश्वर त्याच्या अग्रभागी आहे। I will surely assemble, O Jacob, all of thee. I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the midst of the fold. They shall make great noise by noise of the multitude of men. Enough. So here we read, God is going to gather the remnant of Israel, referring to the 1,44,000 who are going to remain alive while the others are going to be killed. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर इस्राएल के बच्चों को इकट्ठा करेगा। ये जो है 1,44,000 यहूदियों को दिखाते हैं, उनके सिवाय बाकी सब लोग मार डाले जाएंगे, लेकिन ये लोग ही केवल संभाले जाएंगे। येथे आपण पाहतो 1,44,000 इस्रायली यहुदी जे आहेत त्यांच्यावर शिक्के मारले आहेत, ते अवशेष राहतील आणि इतर यहुदी लोकांना मारून टाकण्यात येईल। And the verse says, I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the midst of Bozrah. The fold, the word fold means Bozrah. Bozrah means fold. और यहाँ पर कहा गया है बोसरा की भेड़ बकरियों की नाई में उनको एक संग रखूंगा, वे उस झुंड की नाई जो अच्छी चराई में हो। यहाँ पर ये जो झुंड है वो बोसरा को शब्द का अर्थ है। बसऱ्याच्या मेंढराप्रमाणे एकत्र करीन। लोक समुदाय मोठा असल्यामुळे कुणामध्ये त्यांना कळपाप्रमाणे ते राहतील, म्हणजे बसरा म्हणजे एक कळप। And they shall make great noise by reason of the multitude of men. वे मनुष्य की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। लोक समुदाय मोठे असल्यामुळे ते गजबजतील। So these 1,44,000 are not ordinary Christian Jews, they are noisy Christian Jews. ये 1,44,000 जो लोग हैं, वे लोग साधारण मसीह यहूदी नहीं है, लेकिन वे कोलाहल मचाने वाले मसीह यहूदी हैं। हे 1,44,000 जे यहुदी आहेत ते शांत राहणारे यहुदी नाही, ते गजबजणारे किंवा आरडाओरड करणारे लोक आहेत। What is the name given to Christians who make a lot of noise? जो मसीह लोग बहुत आवाज करते हैं उनको क्या नाम दिया गया है? जे ख्रिस्तीगण खूप आवाज करतात त्यांना कोणतं नाव दिले आहे? Which Christian group makes a lot of noise? कौन सा मसीह झुंड बहुत आवाज करता है? कोणतं ख्रिस्ती गट अधिक आवाज करते? That's why I said these are Pentecostal Jews. इसलिए मैंने कहा हम पेंटिकॉस्टल यहूदी हैं। ये पेंटिकॉस्टल यहूदी हैं। म्हणून मी म्हणतो हे पेंटिकॉस्ट यहुदी आहेत। And the next verse says, the breaker goes before them, the one who removes hindrances goes before them, kills the Jordanian soldiers who are trying to finish them off, and lands them safely in Petra, in the rock that is a shelter for them. और उसके आगे के वचन में लिखा, उनके आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है और यर्दन के सैनिकों को मार गिराकर और वो उन यहूदियों को पेट्रा नाम के उस पहाड़ी स्थान में सुरक्षित ले जाकर छिपा देता है। फोडतोड करणारा त्यांच्या पुढे गेला आहे, सगळ्यांचा संहार करून हे 1,44,000 यहुद्यांना त्यांनी सुरक्षित ठेवले आहे। Now there's going to be an exchange taking place between Jews and Gentiles in the millennium. After the battle takes place, there's going to be 1,000 years of peace, I said. There's an exchange going to take place. इस युद्ध के पश्चात, जैसा मैंने आपको बताया, 1000 वर्ष तक शांति का राज्य होगा। उस समय यहूदियों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में एक आदान प्रदान दिखाई देगा। आणि आपण ह्या युद्धाच्या नंतर 1000 वर्षाचं राज्य, शांतीचं राज्य असणार आणि त्यामध्ये अन्य जाती लोक आणि यहूद्यांच्या मध्ये जे आदान प्रदान होणार। See, these 1,44,000 Jews are a mixture of the earthly Jerusalem and the heavenly Jerusalem, because I told you they are Pentecostals, they have heavenly Jerusalem. Because they are Jews, they are earthly Jerusalem. और ये जो 1,44,000 यहूदी हैं, उसमें वो भौमिक यरूशलेम के और स्वर्गीय यरूशलेम के लोगों का झुंड होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया वो पेंटिकॉस्टल यहूदी और पेंटिकॉस्टल मसीह लोग जो कि वो यहूदी हैं। 1,44,000 जे यहुदीगण आहेत ते मी म्हणतो की ते स्वर्गीय आणि पृथ्वीवरील यहुद्यांचे एक समावेश आहे, कारण ते आवाज करणारे म्हणजे पेंटिकॉस्टल यहुदी असतील असे मी म्हणतो। In Romans chapter 2 and the last 2 verses, रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय का अंतिम 2 वचनों में, रोमकरास पत्र दूसरा अध्यायाचे शेवटले 2 वचनामध्ये the Bible says
the literal Jew is not the real Jew, but he who is circumcised in the heart by Jesus Christ, he is the real Jew. पवित्र शास्त्र कहता है क्योंकि वो यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, लेकिन यहूदी वही है जिसका और खतना वही है जो आत्मा में है, न कि लेख का। कारण जो बाह्य रीतीने यहूदी आहे तो यहूदी नाही पण खरा यहूदी तो ज्याचा अंतर्यामामध्ये Which we are the real सुद्धा Jew. झाली आहे. So we who are seated here, the children of Jesus, we are the real Jews, is what this verse says. इसलिए इस वचन का अर्थ ये है कि हम जो या परमेश्वर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम ही वे सच्चे यहूदी हैं। आणि देवाच्या वचनानुसार आपण जे इथे बसला आहोत आपणच खरे यहूदी आहोत. So we are also Pentecostal Jews in that sense. ऐसा है तो इस अर्थ में हम भी पेंटिकॉस्टल यहूदी हैं। आणि ह्या अर्थामध्ये आपणही पेंटिकॉस्ट यहूदी आहोत. But what's going to happen? लेकिन क्या होने वाला पण है? काय होणार आहे? In the 1,000-year reign, in the millennium, we are going to occupy Jerusalem. 1000 वर्ष के शासन में हम लोग यरूशलेम के अधिकारी बन जाएंगे। आणि 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये आपण यरूशलेमचे रहिवासी होणार आहोत. There's no need to read, but in Revelation 20, Jerusalem is called the camp of the saints. प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यरूशलेम कहने से वो पवित्र लोगों की छावनी कहलाता है। प्रकटीकरण 20व्या अध्यायामध्ये आता वाचण्याची गरज नाही. यरूशलेम म्हणजे संतांची एक छावणी असे म्हणण्यात आले आहे. So we, the Pentecostal Jews, we are going to move towards Jerusalem, a mixture of earthly Jerusalem and heavenly Jerusalem. We are also a mixture now of earthly and heavenly Jerusalem. अभी हम जो भौमिक यरूशलेम और आत्मिक यरूशलेम का एक मिश्रण होकर दिखाई देते हैं, हम जो पेंटिकॉस्टल यहूदी है, हम लोग उस यरूशलेम में जा पहुंचेंगे। आणि आपण आता जे पृथ्वीवरच्या आणि स्वर्गातील यरूशलेमीकरी आहोत, यहूदी आहोत, आपण जे आहे त्या यरूशलेमेमध्ये किंवा 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये असणार. But the literal Pentecostal Jews, the 1,44,000, they are going to move out of Jerusalem and spread through the whole earth to beget a holy seed. लेकिन आक्षरिक रूप से जो पेंटिकॉस्टल यहूदी है, वे लोग पवित्र वंश होकर सारी पृथ्वी भर में फैल जाएंगे, यरूशलेम से वे बाहर आ जाएंगे। आणि लिखित रूपाने जे 1,44,000 यहूदी गण आहेत ते जे आहे यरूशलेमेचे बाहेर होतील, त्यांचा सर्वत्र पांगापांग होईल आणि त्यांच्याद्वारे जनसंख्या वाढेल. Now if you turn to Zechariah chapter 8 जकरिया की पुस्तक 8वें अध्याय में देखने से जकर्याचं पुस्तक 8व्या अध्यायामध्ये and read verse 23. उसका 23वां वचन पढ़े तो 23वां वचन वाचताना सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को ये कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है की परमेश्वर तुम्हारे साथ है. सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो की त्या दिवसात सर्व भाषा बोलणाऱ्या राष्ट्रांपैकी 10 जण यहूदी माणसाचे पदर धरून म्हणतील, आम्ही तुम्हा बरोबर येतो, कारण देव तुम्हा बरोबर आहे असे आम्ही ऐकले आहे. Thus saith the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. In the millennium, there will be Jews and non-Jews outside of Israel. 1000 वर्ष के शासन में इस्राएल के बाहर यहूदी और गैर यहूदी रहेंगे. आणि 1000 वर्षाच्या राज्यात इस्रायलच्या बाहेर यहूदी आणि जे यहूदी नाहीयेत तेही असतील. But because this 1,44,000 Jews are preserved to populate the earth, and because much of the Gentile population is destroyed in the 7-year tribulation, the ratio of the Jews will increase considerably in the millennium. लेकिन क्योंकि 1,44,000 यहूदियों को उन दिनों में सुरक्षित रखा जाता है और जो अन्य जातियों की जनसंख्या उसमें कई लोग 7 वर्ष के महाक्लेश के समय मार डाले जाते हैं, इस कारण से यहूदियों के बीच और अन्य जातियों के बीच का जो अनुपात है वो बहुत अधिक बदल जाता है. इस कारण से वे लोग 1000 वर्ष के शासन में वे दिखाई देते हैं. आणि आपण पाहतो 1,44,000 जे यहूदी सांभाळले गेले आहेत ते बाहेर असतील आणि अन्य जाती लोकही असतील आणि यामुळे आपण पाहतो त्यांची जनसंख्या वाढत राहील. Today India's population is about 1/6 the world's population. आज भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 1/6 में से 1 भाग है. आणि आज जो भारत देशाची जनसंख्या आहे विश्वाच्या जनसंख्येचा 1/6 भाग आहे. Israel's population is about 1,000th the world population. और इस्राएल की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 1000वां भाग है. आणि इस्रायलचं जे भाग आहे जनसंख्या आहे ते
ते विश्वाच्या जनसंख्याच्या बरोबर एकामध्ये 1000 भाग आहे. But in the 1,000-year rule of Jesus Christ, we just read that 10 Gentiles would take hold of a Jew and say, see, you know the route to Israel. You're familiar with Israel. We are familiar with you. When you go, take us also. That means it's going to be approximately 1/10 of the world population. From 1,000th the world population, the Jewish population will increase to 1/10 the world population. लेकिन अभी हमने ये जो वचन में पढ़ा था उसमें 10 अन्य जाति लोग एक यहूदी के वस्त्र की छोर को पकड़कर कहेंगे, हम तुम्हें जानते हैं, तुम इस्राएल के मार्ग जानते हो, इस कारण तुम हमें इस्राएल में लेकर चलो. अभी तो इस्राएल की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 1000वां भाग है, लेकिन उन दिनों में विश्व की जनसंख्या का वो 10वां भाग होकर दिखाई देगा. आता आपण जे वचन वाचलं त्यामध्ये आपण पाहतो अन्य जातीचे 10 लोक यहुदीचे पदर धरून म्हणतील, आमची तुमची ओळख झाली आहे, इस्रायलला जाण्याचा रस्ता तुम्हाला माहित आहे, तर तुम्ही जेव्हा त्याकडे जाताल तेव्हा आम्हालाही न्या. आणि आता जे यरूशलेमेचं जनसंख्या एकामध्ये 1000 भाग आहे, पण त्या दिवसामध्ये एकामध्ये 10 भाग होईल. Now we are going to now listen to a little more important information. अभी उससे भी कुछ एक मुख्य सूचना की ओर ध्यान दीजिए. अजून अधिक सूचनाकडे लक्ष द्या. Now when the Antichrist comes into power, जब मसीह विरोधी सामर्थ में आएगा, जेव्हा ख्रिस्त विरोधी अधिकारात येईल, now he is taking measures so that he will control every human being, not just by force, by instituting laws. They are making plans so that he can control your minds as well, so you will willingly submit to him. वो कई प्रकार के नियमों को बनाकर सबको नियंत्रण करने का प्रयास करता है. इतना ही केवल नहीं, लेकिन वो मनों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है जिससे कि आप उसके अधीन हो सके. आणि ख्रिस्त विरोधी जे आहे काही मार्ग आणि व्यवस्थाने जे आहे संपूर्ण जगाचं नियंत्रण करू पाहतो. एवढंच नव्हे, तो आपल्या मनाचं नियंत्रण असा करेल की सहज रीतीने आपण त्याला समर्पण होणार. They can affect your brains and your thought patterns in such a way by sending waves that will affect your brains through the microwaves that come from cell phone towers. They can make you think without realizing that they are making you think as though you are thinking yourself. और वो आपके मनों पर और दिमाग में इतना अधिक नियंत्रण आपके सोच विचार में कर लेंगे. वो सेल फोन के टावर के द्वारा वे उस संदेश को भेजेंगे और इस प्रकार से आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं ये सोच रहे हैं, लेकिन वे लोग आपको इस प्रकार से सोचने के लिए मजबूर करेंगे. सेल फोनच्या टावरच्या माध्यमाद्वारे अनेक संदेश तुम्हाला ते पाठवतील, ख्रिस्त विरोधी पाठवेल आणि त्याने करून तुमच्या मनावर असा परिणाम होईल की तुम्ही जे विचार करता तुम्हाला वाटेल तुम्ही स्वतः करतात नाही, पण ते वेव्स किंवा लहरच्या द्वारे जे आहेत ते तुमचे मने कब्जेत नेतील आणि जे त्यांना वाटते ते तुम्ही विचार कराल. Technically, this is called electronic mind control. तकनीकी रूप से इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक रीति से मन का नियंत्रण करना. यांत्रिक रीतीने आपलं मनाचं नियंत्रण करणं असं आहे. But although these arrangements are being made so that they can take absolute control over every human being on earth, पृथ्वी पर दिखाई देने वाला हर एक मनुष्य जाति को पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार की कई तरह की तैयारियां की गई है, फिर भी ह्या प्रकारच्या काही तयारी त्यांनी केल्या आहेत जेणेकरून की सर्व मानव जातींचे मन जे आहेत त्यांच्या नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. the Bible prophesies that although he has control, the expected control will not be there. पवित्र शास्त्र कहता है यद्यपि वो नियंत्रण तो करता है, लेकिन जितना वो अपेक्षा करता है उतना वो नियंत्रण नहीं कर पाएगा. पवित्र शास्त्र म्हणते की अधिकतर त्यांनी नियंत्रण केले आहे, तरी सुद्धा अद्याप जितका हवा आहे तितकं नियंत्रण त्यांच्यानी झालेलं नाही. Because God is going to pour out judgments one after the other, which will affect his controlling system as well. क्योंकि परमेश्वर उनके ऊपर एक के बाद एक न्याय को भेजेगा जिसके कारण उसकी नियंत्रण प्रणाली के ऊपर उसका परिणाम होगा. आणि त्या परमेश्वर त्यांच्यावर एवढा न्याय पाठवणार, एकामागे एक न्याय पाठवून जे आहे त्यांचं नियंत्रणाचं जे कार्य आहे ते अपयश होईल. So keep this in mind. In the 7-year tribulation period, although the Antichrist is a world ruler, he will not be having 100% control, or he will not be 100% successful in exercising control over the masses, because in that period also there will be internal skirmishes and bloodshed. और इस बात को मन में रख लीजिए, क्योंकि मसीह विरोधी उन दिनों महाक्लेश के समय में पूरी तरह से संसार का नेता होकर दिखाई देने पर भी उसके हाथ में 100% पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि उन दिनों में भी कई प्रकार के आंतरिक कला और आंतरिक रूप से कई खून खराबा दिखाई देगा. आणि त्या दिवसामध्ये मी सांगतो की ख्रिस्त विरोधी संपूर्ण जगाचं नियंत्रण करत असला तरीही
तो त्याच्या पद्धतीमध्ये तो पूर्ण अपयशी होईल, कारण त्या दिवसामध्येही अनेक रक्तपात आणि अनेक लोक मरत राहतील. Keeping these things in mind, let's come back to Revelation chapter 16, our key scripture. इन बातों को मन में रखते हुए हमारा जो मूल वचन था प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय की ओर हम लौटेंगे. या गोष्टी मनात ठेवत ठेवत जे आहे आपण प्रकटीकरणाचं 16वां अध्याय पाहूया. Let's read verse 12 again. 12वां वचन फिर से पढ़िए. परत एकदा 12वां वचन वाचूया. और चटवे ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए. सहाव्याने आपली वाटी फरात महानदावर ओतली, तो सूर्याच्या उगवतीपासून येणाऱ्या राजांची वाट सिद्ध व्हावी म्हणून तिचे पाणी आटून गेले. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. So here we read of the kings of the east. यहाँ पर हम पूर्व दिशा के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं. इथे पूर्व दिशेचे राजांच्या विषयी पाहतो. के राजाओं को चलने के लिए एक मार्ग तैयार किया जाना आवश्यक है. पूर्व दिशेच्या राजांना चालण्यासाठी एक मार्गाची गरज आहे, वाटाची गरज आहे. And they are going to march towards Israel, crossing the river Euphrates. और वे लोग फुरात नदी को पार करते हुए इस्राएल की ओर वे लोग यात्रा करेंगे. फरात महानदी पार करून ते इस्रायलाकडे जातील. And to allow them to walk through that road, the river Euphrates has to dry up. और वो उस सड़क पर उनको पार करने के लिए वो फुरात नदी को सूख जाना आवश्यक है. आणि हे राजा त्या मार्गाने जाण्यासाठी फरात नदी आटून गेली पाहिजे. Now before we find out who these kings of the east are, we should understand that these kings of the east are going to march towards Jerusalem to fight against the Antichrist during the second half of the tribulation period. पूर्व दिशा के राजा कौन है, इस बात के ऊपर ध्यान करने के पहले हम देखेंगे ये जो पूर्व दिशा के राजा हैं वे महाक्लेश के समय के दूसरे हिस्से में मसीह विरोधी के विरोध में युद्ध करने के लिए वे लोग आगे की ओर जा रहे हैं. या गोष्टी वाचत असताना आपण समजून घेऊया, हे जे पूर्व दिशेचे राजे आहेत ते फरात नदीतून पार करून जातात ह्यासाठी की महाक्लेशाच्या शेवटल्या काळामध्ये ख्रिस्त विरोधीच्या विरोधात त्यांना लढायचं आहे आणि ते लढणार आहेत. Why are they going to march against the Antichrist? क्यों लोग वो मसीह विरोधी के विरोध में वे लोग सामना करने जा रहे हैं? ख्रिस्त विरोधीच्या विरोधात ते का जात आहेत? In the second half of the tribulation period, as the years pass, we see, as the Antichrist rules in the middle of the tribulation period, for two reasons his powers increase very much. मसीह विरोधी के राज्य के दूसरे हिस्से में जब वो उस महाक्लेश के समय के बीच के समय में आता है तो ऐसे दो कारण है जिसकी वजह से उसकी सामर्थ्य और भी बढ़ जाती है. आणि ख्रिस्त विरोधीच्या काळामध्ये आपण पाहतो दोन कारणाने त्याची शक्ती वाढत राहील. One is he takes control of Jerusalem. उसका एक कारण ये है कि वो यरूशलेम के ऊपर कब्जा कर लेता है. प्रथम हे की तो यरूशलेमेवर कब्जा करतो. Before carrying on, I would like to say one point about Jerusalem. आगे बढ़ने के पहले मैं यरूशलेम के बारे में एक विषय बोलना चाहता पुढे हूँ. वाढण्या अगोदर मी यरूशलेमेचा एक गोष्ट सांगू इच्छितो. It's interesting because this point proves how God is the ultimate author of this Bible. ये दिलचस्प बात है क्योंकि इस बात से ये साबित होता है कि परमेश्वर जो है वो पूर्ण रूप से इस पवित्र शास्त्र का लेखक होकर दिखाई देता एक है. चित्तवेधक गोष्ट म्हणजे परमेश्वर कसा ह्या बायबलचा एक लेखक आहे हे समजून येईल. Turn to Ezekiel chapter 5 यह हिजकिय्याल की पुस्तक 5वां अध्याय देखिए हिजकिय्यालाचं पुस्तक 5वां अध्याय पाहूया. and read verse 5. 5वां वचन पढ़िए. 5वां अध्याय 5वां वचन वाचूया. प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वे चारों ओर देशों से घिरी है. प्रभू परमेश्वर म्हणतो, पहा हे यरूशलेम हे राष्ट्रांमध्ये स्थापिले आहे व ह्याच भोवती देश वसविले आहे. Thus saith the Lord God, this is Jerusalem. I have set it in the midst of the nations and countries that are round about her. How does Ezekiel know that Jerusalem is in the midst of many nations around her? यह हिजकिय्याल किस प्रकार से जानता है कि यरूशलेम जो है चारों ओर के देशों से घिरा हुआ एक देश है? हिजकिय्याला कसं माहित की हे यरूशलेम जे आहे त्याच्या अवतीभोवती अनेक देश आहेत म्हणून? There were no helicopters or aeroplanes to have an overhead view. There were no maps in those days. उन दिनों में कोई मानचित्र नहीं था. उस समय आकाश के ऊपर से देखने के लिए कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं थे. त्या दिवसांमध्ये नकाशा नव्हते. त्या दिवसामध्ये वरून पाहण्यासाठी हेलिकॉप्टर किंवा विमान नव्हता. Ezekiel was only a captive Jew. यह हिजकिय्याल तो केवल एक यहूदी था जो बंधुआ था. आणि हा यहेजकेल जो आहे तो एक बंधनात असलेला यहूदी होता. But God has revealed this to him. लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर ये बात को प्रकट करके दिया. पण देवाने हे गोष्ट त्याला प्रकट केले आहे. Now look at the map.
अभी इस मानचित्र को देखिए, हे नकाशा पहा, That's Jerusalem. वो यरूशलेम है. तो यरूशलेम आहे. Now, you look at this entire stretch. This is Asia. अभी ये जो पूरा हिस्सा है वो आसिया महाखंड को दिखाता है. आणि दुसरा भाग जो आहे तो आशिया खंड आहे. And you look below is Jerusalem. This is Africa. यरूशलेम के नीचे देखिए, यहाँ पर अफ्रीका है. यरूशलेम में खाली अफ्रीका आहे. And you look to the north of Jerusalem. This is Europe. यरूशलेम के उत्तर में देखिए, वहाँ पर यूरोप है. आणि यरूशलेमेचे दक्षिण उत्तरेकडे पहा, तिथे युरोप आहे. So Jerusalem is the center point between three continents: Asia, Europe, and Africa. एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीन महाभूखंडों के बीच में ये यरूशलेम दिखाई देता है. आणि यरूशलेम जे आहे युरोप आणि बाकीचे दोन राष्ट्रांच्या मध्यभागी, आशिया खंडाच्या मध्यभागी आहे. See how precise was God's message to Ezekiel. He didn't know it, but look at the map. It's in the center point of three huge continents. परमेश्वर ने यहेजकेल को जो संदेश दिया था वो कितना अधिक निश्चित होकर दिखाई दिया था. वो देखिए वो किस प्रकार से वो तीन महाखंडों के बीच में वो यरूशलेम दिखाई दे रहा है. परमेश्वराने जे दृष्टांत यहेजकेलला दाखवलं होतं ते कसं सत्य आहे पहा. ते आपण पाहतो हे जे यरूशलेम आहे ते बाकीचे तीन एशिया खंडाच्या महाखंडाच्या मध्यभागी आहे. Thus saith the Lord, this is Jerusalem. I have set it in the midst of the nations that are round about her. प्रभु यहोवा यो कहता है, यरूशलेम यही है, मैंने उसको अन्यजातियों के बीच में और चारों देशों से घिरा हुआ ठहराया है. प्रभू परमेश्वर म्हणतो पहा, हीच ते यरूशलेम आहे आणि राष्ट्रांच्या मध्यभागी मी त्याला स्थापिले आहे. Now, who are these kings of the east? अभी ये पूर्व देश के राजा कौन है? आता हे पूर्व दिशेचे राजे कोण आहेत? Before we go to find out who these kings of the east are, ये पूर्व देश के राजा कौन है, इस बात को ढूंढने के पहले पूर्व दिशेचे राजे कोण आहेत ते समजणे अगोदर come back to the map. हम मानचित्र में वापस लौटे. आपण ते नक्षाकडे पाहूया. We all know, many of us here know about Middle East. हम में से अधिकतर लोग मध्य पूर्वी देशों के बारे में जानते हैं. आपण मध्य पूर्व देशाविषयी जाणतो. These are the Middle East countries. ये मध्य पूर्वी देश हैं. हे सर्व मध्य पूर्व देश आहेत. Here is the UAE, and there is Muscat, and there is Abu Dhabi, and Qatar, or Bahrain. All these are here. यहाँ पर यूएई है, मस्कट है, बहरीन है, कतार है, अबू धाबी है. तिथे युएई, मस्केट, अबू धाबी, कतार हे सर्व आहेत. India, Pakistan, China, Japan, they are all far east countries. और भारत, पाकिस्तान, जापान, ये सब जो है दूर के पूर्वी देश हैं. भारत, पाकिस्तान, जपान हे सर्व लांबचे मध्य पूर्व देश आहेत. We know Japan is called the land of the rising sun. It's the far east country. हम जानते हैं जापान जो है वो सबसे पूर्वी देश है और वो उगते हुए सूर्य का देश कहलाता है. आणि जपानला आपण पाहतो की उगवता सूर्याचा देश आहे, तो पूर्व दिशेला आहे. So keep this in mind. इस बात को मन में रखिए. या गोष्टी मनात ठेवा. Now, we are going to compare Revelation chapters 8 and 9 and Revelation chapter 16. प्रकाशित वाक्य 8 और 9 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय को हम तुलना करके देखें. प्रकटीकरण 8 आणि 9 अध्याय आणि 16वा वचन हे अध्याय हे सर्व तुलना करून पाहूया. The Bible says when the Antichrist comes into power, for a few months there will be peace. पवित्र शास्त्र कहता है जब मसीह विरोधी अपना राज्य आरंभ करेगा तो कुछ महीनों के लिए शांति होगी. जेव्हा ख्रिस्त विरोधी आपल्या राज्यात येईल आणि प्रभुत्व करायला सुरुवात करेल, काही काळापर्यंत शांती असेल. But the Bible also says when the whole world is celebrating peace, saying peace and safety at last, then sudden destruction will come upon them as a woman with travail, and they shall not escape. लेकिन पवित्र शास्त्र ये भी कहता है जब सारा संसार इस बात को आनंद मनाकर कहेगा कि शांति है और कुशल है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, ऐसे समय में उनके ऊपर अचानक विनाश आ पड़ेगा जिस प्रकार से गर्भवती के ऊपर पीड़ा आती है और उसमें से कोई ना बचेगा. आणि जेव्हा संपूर्ण जग म्हणेल शांती आहे, कुशल आहे, त्यावेळेस जे आहे अचानक विनाश येऊन पडेल. जशी प्रसूती वेदना एका गरोदर बाईला होते तसेच त्यांच्यावर येईल आणि कोणीही त्यातून वाचणार नाही. So during that 7-year rule of the Antichrist from heaven, 7 judgments are going to be poured out one after the other. और मसीह विरोधी के उस 7 वर्ष के काल में स्वर्ग से 7 प्रकार का न्याय इस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा. ख्रिस्त विरोधीच्या त्या 7 वर्षाच्या राज्यामध्ये वरून देवाचा 7 प्रकारचा न्याय लोकांवर उतरेल. These 7 judgments have been mentioned twice in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये 7 प्रकार के न्याय को 2 बार वर्णन किया गया है. प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये हे 7 प्रकारचे न्याय दोनदा लिहिले आहेत. First time it's mentioned in the Jewish viewpoint as 7 trumpets being blown. The second time it's mentioned as from the Gentile or church viewpoint as 7 vials being poured out onto the earth. और पहली बार हम देखते हैं वो यहूदियों के दृष्टिकोण से
7 प्रकार की तुरई फूके जाने के बारे में कहा गया है, और दूसरी बार जब उसका वर्णन किया गया है तो अन्य जातियों के दृष्टिकोण से 7 प्रकार के कटोरों को इस पृथ्वी पर उंडेले जाने के बारे में बताया गया है. आणि आपण पहिल्यांदा पाहतो यहुद्यांच्या दृष्टिकोनाने 7 करण्यांचा नाद होत आहे असे पाहतो, आणि दुसऱ्यांदा जे आहे अन्य जाती लोक किंवा मंडळीवर येणारे जे आहे परमेश्वराचा जो न्याय आहे ते 7 वाट्या ओतल्या गेल्यात असं आपण पाहतो. These 7 trumpets are mentioned in Revelation 8 and 9. प्रकाशित वाक्य 8वें और 9वें अध्याय में 7 तुरही के बारे में वर्णन किया गया है. प्रकटीकरण 8व्या आणि 9व्या अध्यायामध्ये हे जे 7 करणा वाजतात त्यांचा नादाविषयी लिहिलं आहे. And the 7 vials are mentioned in Revelation 16. और 7 कटोरों के बारे में प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में कहा गया है, आणि 7 16 अध्याय में कहा गया है. 7 वाट्यांविषयी प्रकटीकरण 16व्या अध्यायामध्ये म्हटले आहे. Now I told you both are essentially the same, although they may seem different when you read them. They are essentially the same, only complementing each other. मैंने आपको बताया कि ये दोनों दिखने में आपको ऐसा लगता होगा कि दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल एक जैसे समान है, क्योंकि वो एक दूसरे से तुलनात्मक होकर दिखाई देते हैं. आणि हे दोन आपल्याला असं वाटतं की ते वेगळे आहे पण ते दोन्ही एकच आहेत. I'll just give you some examples. मैं उसके लिए आपको कुछ उदाहरण दूंगा. त्याचे काही उदाहरण मी तुम्हाला देतो. In Revelation chapter 8, when the first trumpet is sounded, प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में जब पहले तुरही फूकी जाती है, प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 8व्या अध्यायामध्ये जेव्हा पहिला करणा वाजला judgment is poured out on the earth. उस समय पृथ्वी के ऊपर न्याय उंडेला जाता है. तेव्हा पृथ्वीवर न्याय ओतलं गेलं. So one third of the trees are burnt up. तो पेड़ों की 1/3 जल जाती है. 1/3 झाड जे आहे जळून जातात. When you turn to Revelation chapter 16, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में देखने से प्रकटीकरण 16 अध्याय पाहताना although we see that there was a kind of a disease spreading all over amongst human beings, we see that the judgment is poured out on the earth. वहाँ पर हम देखते हैं वो एक ऐसा लगता है मानो किसी मनुष्य जाति के ऊपर एक प्रकार की बीमारी फैलती है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के ऊपर वो उसका न्याय किया जाता है. आणि 16व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो एक प्रकारचा आजार लोकांमध्ये पसरत आहे, पण हे जे आहे देवाचा न्याय लोकांवर ओतलेला आहे. So it's not a contradiction. It means that trees were burnt up and diseases came. ये कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि एक तरफ पेड़ भी जल गए, दूसरी तरफ वो बीमारी भी मनुष्य के ऊपर आ गई. हे काय विपरीत गोष्टी नाही आहेत. एकीकडे आपण पाहतो झाडे जळाली आणि दुसरीकडे आजार पसरली. When the second trumpet is sounded in chapter 8, और 8वें अध्याय में जब दूसरी तुरही फूकी जाती है, 8व्या अध्यायामध्ये दुसरा कर्णाचा नाद होतो तेव्हा the sea is affected. वहाँ समुद्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है. त्याचा समुद्रावर परिणाम होतो. In chapter 16, when the second vial is poured out, although something different happens, basically the sea is affected. और 16वें अध्याय में हम देखते हैं जब दूसरा कटोरा को उंडेला गया था, उस समय वो चाहे दिखने में कुछ अलग लगता होगा, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव समुद्र के ऊपर पड़ता है. आणि 16व्या अध्यायामध्ये जेव्हा दुसरी वाटी ओतली गेली तेव्हा आपण पाहतो की तिथे समुद्र नाही असं लिहिले तरी सुद्धा जे इतर परिणाम झालेले आहेत ते समुद्रावरही त्याचा परिणाम होतो. Again, in the third judgment, in both places, the rivers and water bodies are affected. और जो तीसरा न्याय होता है उसमें भी जो दोनों तरफ हम देखते हैं कि उसके द्वारा नदी के ऊपर और पानी के तालाबों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है. आणि आपण तिसरा जे कर्णाचा नाद आणि वाट्या ओतल्या गेल्या त्यामध्ये आपण पाहतो नद्यांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. Now let's jump to the sixth judgment, which is our subject. अभी हमारा विषय जो 6वां न्याय है उसकी ओर हम आगे बढ़े तो आता 6वा विषय जे आपला विषय आहे त्याकडे आपण पाहतो. Read chapter 9 and verse 14. प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 14 वचन पढ़िए. 9वां अध्याय 14वां वचन वाचूया. मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे. कर्ण असलेल्या 6व्या देवदूताला ती म्हणाली, फरात महानदीवर बांधून ठेवलेल्या 4 देवदूताला मोकळे कर. Saying to the 6th angel which had the trumpet, loose the 4 angels which are bound in the great river Euphrates. When the 6th vial is poured out in chapter 16, something else is said, but you will see the river Euphrates in both. 16वें अध्याय में जब 6वां कटोरा उंडाला जाता है उस समय कुछ और बात कही जाती है, लेकिन वहां पर भी फुरात नदी के बारे में कहा गया है. 16व्या अध्यायामध्ये जेव्हा वाटी ओतली गेली तेव्हा आपण काहीतरी वेगळं वाचतो, पण दोन्ही वचनांमध्ये फरात नदी आहे हे आपण पाहतो. So when the 6th judgment is sent down to earth, the river Euphrates dries up
and there are some evil spirits bound in the bed at the bottom of the river Euphrates which are released. और छठवां जब न्याय उस संसार में भेजा जाता है उस समय फुरात नदी सूख जाती है और फुरात नदी के नीचे गहराई में जो कई तरह की दुष्टात्माएं जो बंधी हुई थी वह खुलकर आती है. आणि आपण पाहतो जेव्हा हे 6वा न्याय पृथ्वीवर आला त्यावेळेस फरात नदी आटून जाते आणि फरात नदीच्या खालच्या भागामध्ये काही दुष्ट आत्मे आहेत त्यांना सोडवले जाते. Now coming back to the kings of the east. और पूर्व दिशा के राजाओं के बारे में आगे देखें तो आता पूर्व दिशेचे राजांविषयी जर पाहिलं तर Some nations are going to join together and go against the Antichrist. कुछ राज्य एक साथ मिलकर मसीह विरोधी का विरोध करेंगे. काही राष्ट्र एकत्रित होऊन जे आहे ख्रिस्त विरोधीचा विरोध करतील. What those nations are, we cannot say exactly, but most probably they are the kings of the far east, of which China will be the chief. वे कौन से देश है ऐसा हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी वो दूर के पूर्वी देश हो सकते हैं और जिसमें जो चीन है वो उनका अगुवा हो सकता है. आता हे कोणते देश आहेत त्याचा अनुमान आपल्याला लावता येत नाही, पण पूर्व दिशेचे काही देश आहेत आणि त्यात आपण पाहतो चीन हे देश जे आहे त्यातला मुख्य असणार. There are 3 reasons for saying China will be the chief. चीन देश उसका मुख्य देश होगा उसको कहने के लिए 3 कारण है. चीन देशांचा मुख्य असेल असं ह्या स्थापित करण्यासाठी 3 कारण आहेत. The first reason is China is the only country of the Far East which is powerful enough. Indeed, today it's quickly growing into being a superpower, and it will have the weapons and the power and the population to resist the Antichrist. पहला कारण ये है कि पूर्वी देशों में चीन देश ही सबसे जो अधिक से अधिक वो बढ़ता जा रहा है, वो सब प्रकार से उन्नति कर रहा है. उसके पास सब तरह की सामर्थ्य और कई तरह के हथियार हैं जो कि मसीह विरोधी का युद्ध करने के लिए वो अपनी तैयारी कर रहा है. आणि आपण पाहतो पूर्व दिशेत असलेल्या अनेक राष्ट्रांमध्ये चीन हा एक देश आहे आणि त्याची संस्कृती लवकरात लवकर वाढत आहे. त्याकडे अनेक शस्त्र सामग्री आहेत आणि लढाई करण्यासाठी तो तयार आहे आणि तोच ख्रिस्त विरोधीच्या विरोधात लढणार. So that's the first reason why I say China will be the chief of those kings of the east which will resist the Antichrist. और यही पहला कारण है जिस वजह से मैं कहता हूँ कि चीन उन पूर्वी देशों में मुख्य देश होगा जो कि मसीह विरोधी का सामना करेगा. म्हणून मी म्हणतो की हे जे राष्ट्र ख्रिस्त विरोधीच्या विरोधात लढणार आहे त्यामधला चीन हा मुख्य देश असणार. The other reasons I will tell you shortly. उसके दूसरे जो कारण है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. त्याचे जे इतर कारण आहे ते नंतर मी तुम्हाला सांगेन. But there's an immediate question that must be answered. लेकिन एक प्रश्न है जिसका तुरंत ही जवाब देना पण है. एका प्रश्नाचं उत्तर लवकरच मिळायला पाहिजे. Can a country rise up like that and resist the Antichrist independently when the Antichrist is in full power? जब मसीह विरोधी पूर्ण रूप से सामर्थ्य के साथ दिखाई देता है तो क्या केवल एक देश इस प्रकार से स्वाधीनता से उठकर उसका सामना कर सकता है? जेव्हा ख्रिस्त विरोधी पूर्ण प्रबळ होत आहे त्यामध्ये तो पराक्रमी होत आहे त्यावेळेस एकटा देश काय उठून त्या ख्रिस्त विरोधीचा विरोध करून त्याच्या विरुद्ध लढू शकतो का? Yes, because one, I told you, the Antichrist will not be fully successful in gaining that power. हाँ हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया था मसीह विरोधी जो है पूरी तरह से उस सामर्थ्य को पाने में कामयाब नहीं होगा. हो असे होऊ शकते. एक कारण हे आहे की ख्रिस्त विरोधी अधिकारी असला सर्व गोष्टींचा तरीही तो सर्व गोष्टींना नियंत्रण करण्यामध्ये तो अपयशी ठरेल. The second reason I will tell you in a little while. और दूसरा जो कारण है थोड़ी देर में बताऊंगा. आणि दुसरं कारण मी काही वेळानंतर सांगेन. So I'm heaping points upon points and I'm telling you, I'll tell you in a little while. That's why I said if you don't listen carefully, it'll go above your head. इसलिए मैं कई विषयों को इस प्रकार से इकट्ठा करके कह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा. इसलिए मैंने आपको कहा था आप ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप आगे क्या और आप समझ नहीं पाएंगे. अनेक गोष्टी मी तुम्हाला समजावून सांगू इच्छितो. एका मागे एक आहेत म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की तुम्ही लक्षपूर्वक ऐकलं नाही तर ह्या गोष्टी तुमच्या डोक्यावरून जातील. Come back to Revelation chapter 9. प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में वापस आइए. आता प्रकटीकरण 9वां अध्याय पहा. I told you we are focusing on the 6th judgment where the river Euphrates is involved. मैंने आपसे कहा कि हम 6वें न्याय के बारे में ध्यान से देख रहे हैं जहाँ पर फुरात नदी संबंधित है. आपण 6व्या न्यायाविषयी पाहत आहोत ज्यामध्ये फरात नदीचा संबंध आहे. And read verses 15 and 16. 15 और 16 वचन पढ़िए. 15 आणि 16 वचन वाचूया. और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य के 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी. मैंने उनकी गिनती सुनी. तेव्हा मनुष्यापैकी तृतीयांश मनुष्यजीवी मारण्याकरिता नेमलेली घटिका, दिवस, महिना व वर्ष यांसाठी तयार केलेले हे 4 देवदूत मोकळे झाले. स्वारांच्या सैन्याची संख्या 20 कोटी होती. ही त्यांची संख्या मी ऐकली. Now, sorry. And the 4 angels were loosed, which were prepared for an hour,
and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men. And the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. Now, these 4 fallen angels are released from the Euphrates. ये चारों गिरे हुए दूत जो है फुरात नदी से खोल दिए गए, आणि फरात नदीत जे 4 पतन पावलेले आत्मे होते त्यांना सोडवले. And with them is an army of fallen spirits, 20 crores strong. और उनके साथ वो जो गिरे हुए सेनाओं की जो फौजों की सवार थी, जिनकी गिनती 20 करोड़ थी. आणि त्यांच्या बरोबर अनेक लोकांचा समुदाय होता. त्यांच्या सैन्याची गणना 20 कोटी होती. Now listen carefully. ध्यान से सुनिए. आता लक्षपूर्वक ऐका. These 4 spirits that are in the lead and the 20 crore spirits that are behind them do not belong to the kingdom of Satan. ये जो 4 आत्माएं हैं, जो गिरी हुई आत्माएं हैं, और उनके पीछे जो 20 करोड़ लोग हैं, वे जो है शैतान की सेना से संबंधित नहीं आता है. हे जे 4 पतन पावलेले आत्मा जे सुटले फरात नदीतून आणि त्यांच्या मागे असलेले 20 कोटी सैन्य जे आहेत ते सैतानाच्या राज्याचे नाहीत. In fact, there are 2 releases of spirits in this chapter, which both, and that first release is in where locust-like spirits come and start stinging people in the earth. Those spirits also do not belong to the kingdom of Satan. वास्तविकता यह है कि इस अध्याय में हम 2 प्रकार की आत्माओं को इस प्रकार से जो बंदी अवस्था में थी उन्हें खोला हुआ हम देखते हैं. उनमें से एक वो टिड्डियों की आत्माएं थी जो आकर मनुष्यों को डंक मारती है, लेकिन वो शैतान की सेना से संबंधित नहीं है. 2 प्रकारचे आत्मे जे आहेत सोडवले गेले आहेत आणि त्यात आपण पाहतो एक टोळ्यांसारखा एक किडा आहे. ते येऊन लोकांना डंक मारतो आणि हेही जे आहे सैतानाच्या राज्याचं नाही. One is because they are not operative now. उनमें से एक ये वो इसके लिए है क्योंकि वो अभी उसको क्रियाशील नहीं है. आता त्यांचे कार्य घडत नाही. They are bound. वे बंधे ते अवस्था में हैं. बंधनात आहेत. The second reason is when they are released, they are working against those who have taken the mark of the beast, against the citizens of the Antichrist. और दूसरा कारण ये है कि जब वो लोग आजाद कर दिए जाते तो जिन्होंने उस पशु के अंक को अपने ऊपर धारण किया है या पशु का चिन्ह अपने ऊपर लिया है और जो पशु की उपासना करते हुए उनका विरोध करती हैं. आणि दुसरं हे आहे की जे लोक ते श्वापदाचं चिन्ह संख्या आपल्या माथ्यावर घेतले आहे, श्वापदाला ते नमन करतात, असल्या लोकांना ते डंक मारते. Now these 4 angels, fallen angels, and the spirits, the 20 crore spirits with them, are released with an assignment. The assignment is to get rid of 1/3 of the human population. ये जो गिरे हुए स्वर्गदूत और उनके साथ जो 20 करोड़ सेना भेजी जाती है, उनको एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा जाता है कि वो 1/3 जनसंख्या को मार डाले. आणि हे जे सोडवलेले गेलेले जे दुष्ट आत्मे आहेत ते आणि त्यांच्या मागे असलेले जे 20 कोटी सैन्य आहेत त्यांना ह्यासाठी पाठवले आहे की जनसंख्याला पूर्णपणे नाश करावे. 1/3 जनसंख्या नाश करण्यासाठी. But when you look at this 20 crore population of the 20 crore army, परंतु जब आप इस 20 करोड़ की सेना को देखेंगे तो जेव्हा आपण 20 कोटी जनांचं जे सैन्य पाहतो, when you read the verses connected with them, उससे संबंधित वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो त्याच्या संबंधित वचने जेव्हा आपण वाचतो, on one part they are called horsemen in verse 16. और 16 वचन में हम उसे घुड़सवार की सेना ऐसा पढ़ते हैं. आणि घोडदळांची सैन्य असं आपण 16व्या वचनात पाहतो. On the other part they have some kind of a demonic description in the verses below. और उसके नीचे के वचनों में देखने से एक दुष्टात्माओं के समान उनका विवरण किया गया है. आणि खालच्या वचनामध्ये दुष्टात्मांच्या सारखं त्यांचं विवरण केले आहे. So the conclusion is this. इसलिए निष्कर्ष ये है आणि त्याचा निष्कर्ष हा, This 20 crore army is 20 crore spirits possessing 20 crore people, forming a demon-possessed army of human beings which are 20 crore in number. 20 करोड़ की सेना कहने से वो 20 करोड़ दुष्टात्मा है जो 20 करोड़ व्यक्तियों के अंदर प्रवेश करती है और वो जो 20 करोड़ की सेना होकर वो दुष्टात्माओं से ग्रसित सेना होकर बदल जाती आता है. 20 कोटी असं लिहिलेलं आहे. हे जे 20 कोटी आहेत ते 20 कोटी वेगवेगळ्या प्रकारचे दुष्ट आत्मे आहेत. ते लोकांच्या मध्ये जाऊन जे आहे ते एक सैन्य होऊन तयार होते. So now in this 6th judgment, here in chapter 9, these spirits are released, and in chapter 16, you see an army headed by the kings of the east, slowly making their way towards Jerusalem, crossing the river Euphrates. यहाँ पर इस 9वें अध्याय में हम देखते हैं ये 20 करोड़ की सेना जो है उस समय आजाद कर दी जाती है और वे लोग सामर्थ में आते हैं. और दूसरी तरफ 16वें अध्याय में हम देखते हैं जो पूर्व दिशा के राजा हैं
जो कि यरूशलेम की ओर धीरे धीरे सवार करके आते हैं। आता 16व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो हे 4 दुष्ट आत्मे सोडवले गेले, त्यांच्या मागे 20 कोटी सैन्य आणि ते फरात नदी पूर्व दिशेतले राजे जे आहेत ते तिथून निघतात आणि त्यांचाही सैन्य तयार होतो. Now I will tell you the second reason why I say China will be the chief of these countries. चीन जो है इन राज्यों में मुख्य राज्य होगा, उसका कहने का जो एक और दूसरा कारण है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. आणि चीन देश जे आहे ह्या राज्यातला मुख्य असेल ह्याचं दुसरं कारण मी तुम्हाला सांगतो. Only China has the population by which it can provide an army 20 crores strong. केवल चीन देश के अंदर ही ऐसी एक जनसंख्या है जहां पर वो सामर्थ्य 20 करोड़ लोगों को वो सेना के रूप में दे सकता है. आणि चीन देशामध्ये एवढं सामर्थ्य आहे जेणेकरून ते 20 कोटी लोकांचं सैन्य तयार करू शकतो. So maybe a few other countries might provide add to the population of the army, but China will be chief. इसलिए हो सकता है कि और कुछ देश जो हैं वो सेना में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो मुख्य जनसंख्या होगी वो चीन देश की होगी. आणि होऊ शकते इतर राष्ट्राचे लोक त्याला मदत करतील चीनला, पण चीन हाच मुख्य असणार. The third reason, तीसरा कारण, आणि तिसरं कारण the popular colors in China are red and yellow. चीन देश के जो मुख्य रंग है वो लाल और पीला है. आणि चीन देशचे मुख्य रंग लाल आणि पिवळा आहे. And between yellow and red, in the colors of the rainbow, you find orange. और जो सतरंग है उसमें से वो लाल और पीले रंग के बीच में नारंगी रंग दिखाई देता है. आणि जे इंद्रधनुष्याचा रंग आहे त्यामध्ये आपण पाहतो लाल आणि पिवळ्या रंगाच्या मध्ये केसरी रंग आहे. So keeping these colors in mind, इन रंगों को मन में रखते हुए, हे रंग मनात ठेवत, and when you read verse 17 of chapter 9, 9वें अध्याय का 17वां वचन पढ़िए. आणि 9व्या अध्यायाचं 17वां वचन वाचूया. this 20 crore army, they had breastplates of fire, jacinth and brimstone. और ये जो 20 करोड़ की सेना थी उनकी झिलम आग, धूम्रकांत और गंधक की सी थी. आणि यांचं जे उरस्थान आहे त्यामध्ये आपण पाहतो अग्नी, धूर व गंधक ह्याचे निधन होते. Fire is a red, orange and yellow mixture. आग कहने से उसका रंग लाल और नारंगी और पीला रंग से संबंध से मिला जुला है. अग्नीचा रंग जे आहे लाल, पिवळा आणि नारंगी असते. Jacinth is orange in color. और धूम्रकांत का रंग भी नारंगी है. आणि धुराचा जे रंग आहे तेही नारंगी आहे. You can check this out. Brimstone is sulfur, which is yellow in color. और गंधक जो है वो पीले रंग का होता है. आणि जे गंधक आहे ते पिवळ्या रंगाचं असतं. So this